कर दे यार, स्माइल कर दो, कुछ स्माइल नहीं नहीं होता है। होती ब्रो, नींद उड़ गई है, मंजिल खो गई है, इंडिया ने धुलाई कर दी है। अब क्या कह सकते, अब तो बैंटर शैंटर तो भूल ही जाओ, पैर किधर है आपके? वो दूसरे वाले वलीद भाई ने तो आने से ही मना कर दिया। ना करो। अच्छा अच्छा, बात सुन वलीद, मजे की बात सुन। उसको पूछा तो कह रहा है यार वो आज मेरे वाइफ के कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं। फिर मैंने ना यूसुफ को किया मैसेज, मैंने कहा तो कल ना उसका मैसेज आता है, मेरे को भी एक बार कॉल पे ले लो। मैंने कहा चल या तुझसे पूछता हूँ। कहता मैं अपने इन लॉज के हूँ। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, तुम सारे सेलिब्रेट क्या कर रहे हो अपने इन लॉज और रिलेटिव्स के साथ? और वो यार कम बना रहे हैं, इन लोगों के साथ सेलिब्रेट कोई नहीं करता। तमीज वही से बंदा दुम सीधी करता है और बैठता है। रिश्तेदारों के साथ खुशी और गम दोनों में दोनों साथ होता बनाए है ना, जाते हैं। तो ये गम वाला ही वो। ये वलीद तूने ब्लैक कलर इसीलिए पहना है? यू मोर्निंग ब्रो द लॉस? भाई I don't even know if I'm mourning the loss because the loss was very emphatic, you know, like हमने पहले ही बोल चुके हैं, एड्रेस कर चुके हैं कि हम बहुत नम है। इंडिया पाकिस्तान 50 ओवर में हम एंटिसिपेट हमेशा इतना बिल्डअप करते हैं। मैं तपता हूँ, क्यों बिल्डअप करते हो यार? मत क्या करो इतना बिल्डअप, प्लीज फाइंड समबडी एल्स, लीव पाकिस्तान अलोन। भाई अब इन्होंने ब्लैक इसलिए डाला है, वो दे आर बैंकिंग ऑन कीवीज। अब ये बोलेंगे यार तुम्हारे को तो हम न्यूजीलैंड से आते हैं। न्यूजीलैंड। नहीं यार, न्यूजीलैंड से टीवी तो पुराना नहीं, नहीं। पुराना हिसाब है, हम हारते आ रहे हैं, बट इस बार हम नहीं। उनको भेज देंगे। नहीं वलीद, हम अगला गेम अब बिल्डअप करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, क्योंकि उसमें नसीम शाह नहीं है पाकिस्तान के पास। वैसे that's true, it should be a good game, it's always a really good game, but अभिषेक किधर है? अभिषेक आज वो भी सेलिब्रेट कर रहा है, वो आए नहीं। भाई उसने इंडिया की जीत खत्म होते होते ऐसे दारू शारू पी ली, वो अभी तक टल्ली है। इनफैक्ट बट यार चल गेम पे आते हैं। लाइक यार मुझे भाई समझ नहीं रिकॉर्ड इज इट, सॉरी इज हाँ इट हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हुई हुई है, Yeah. वो कुछ कर लेगा एडिट। अच्छा, ये अभी से शुरू हो गया है फॉर्मल सीन ऑन या? तो तूने अभी तक जो बोला हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा, ये जाएगा यूट्यूब पे? हाँ, जो ये तो रील बनेगी, जो तूने ये बोला ना, मैं कहाँ गुम हूँ, गायब हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा। मंजिल खो यार, चुकी ये ना है। करो। Oh no. But okay, honestly, Pakistan deserves it, so I don't feel ashamed in the slightest. नहीं बट यार गेम में हुआ क्या, जैसे हम लोग सारे इकट्ठे देख रहे थे गेम। यार शुरू में तो वो जो 2-3 ओवर तो चौके लगने लगे ना, तो हमने कहा भाई आज तो बैटिंग पार्ट है। मैंने कहा 300-320 का टारगेट मिलेगा इंडिया को, क्योंकि भाई स्टेबल बैट्समैन है पाकिस्तान के पास सारे। वो 30 ओवर तक तो गेम सही चल रहा था। 30 ओवर तक तो भाई एक बार हम भी डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ यार बाबर का विकेट चाहिए, रिजवान का विकेट चाहिए। मतलब एक बार हमें था कि यार क्रिकेटिंग सेंस में ज्यादा क्लोज ना हो जाए गेम, 270 280 पे वाइंड अप कर लो। वो भाई अचानक से वो तो जैसे विकेट, वो तो पुरानी पाकिस्तान बन गई कि 2 बैट्समैन आउट होते ही पूरी टीम खत्म। यार ऑनेस्टली लाइक 155 में जो बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले 30 ओवर्स हमने बैटिंग बहुत अच्छी की थी, तुम लोगों ने बॉलिंग भी बुरी नहीं की थी। What I can only take away from Pakistan's batting is everybody looked good from the top four. Rizwan, Babar, Abdullah Shafiq, Imam, they all looked good until the ball they got out on. उससे पहले मुझे इतने खास ट्रबल में अब्दुल्ला शफीक नहीं लग रहा था। I know एक दो LBW decisions, Marais Erasmus आज हमारा 12 मैन था, he tried his best, but उसके अलावा भी we looked good batting wise. I feel like we were playing a high level of cricket. जैसे ही तुम लोगों ने रेजिस्टेंस तोड़ी है ना, हमारी एक बैक तोड़ी है बाबर की, इट जस्ट क्रम्बल्ड, लाइक कोई वो हाई लेवल सस्टेन ही नहीं कर पाया। एंड दैट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू इंडिया कि वो लगा रहता है, हाई लेवल बॉलिंग कराता रहता है, हाई लेवल प्रेशर लगाए रखे रहता है। लाइक चौके भी पड़ रहे थे सिराज को, लाइक ही वाज बॉलिंग विकेट टेकिंग डिलीवरीज, बुमराह वाज बॉलिंग विकेट टेकिंग डिलीवरीज। सो मैं जहां तक क्रेडिट देता हूँ पहले पाकिस्तान को फुली फॉर द फर्स्ट 30 ओवर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म जो पीपल दे रहे हैं कि timid थे, black luster थे, they didn't take the game. I think they played to the best they could. We don't have a Rohit, we don't have a Virat. हमारी potential ही ये है, and that's how we were going to get to 300. Yeah, like we have to take that loss on our chin. All credit to India, the way they bowled, and they broke our resistance, they broke our back, and we crumbled. So that's something we have to take with us. 190 was not something we could defend. The pitch was a bit tricky, and I don't want to get into too many issues because we're going to get into this later. But like the pitch didn't feel like a 340, 350. I feel like if we For scored sure. 280, 290, it would have been a very competitive game. True. नहीं, अब वलीद ने बड़ा सही सम अप किया है। लाइक आई थिंक 30 ओवर्स तक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा वनडे टेम्पलेट खेला है।
And as coming back to the previous conversation we had in the video, यार वही वाली बात है इन गेम्स में ना, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर. तो पिच चेंज नहीं होगी एकदम, या बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने शुरू हो गई. आई थिंक इट वाज ऑल प्रेशर कि वो बाबर और रिजवान की, बाबर आउट हुआ है एंड आई थिंक उसके बाद कोई भी कोप अप नहीं कर पाया उस बाबर की विकेट को, एंड कोई भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया. एंड आई फील उसी होल प्रोसेस में रिजवान आल्सो गॉट अ डिसेंट बॉल जो उसने कट करने की कोशिश की एंड ही गॉट आउट. सो वही वाली बात है, प्रेशर नहीं लिया गया एंड यू गाइस डिडंट परफॉर्म टू द पोटेंशियल जो स्टार्ट मिला था तुम्हें. Sid? Yeah, yeah, like pretty much. Honestly, मैं ये भी बात कर रहा था. I haven't followed Pakistan cricket over the years. Like I've only been following them जैसे world tournaments आते हैं. And for me, like Babar Azam hasn't performed. I can see like okay he has a class and so on, but today like big match, pressure match. Uh, as soon as he hit 50, means Rizwan got a good ball. But Babar's shot selection at that moment, it was pretty much a straight ball. And then, like, once he got out, then you're right. Like, Rohit Sharma, credit to Rohit Sharma's captaincy. He went for the kill. He brought back Shiraz. He brought back Bumrah. He didn't even like try to keep their overs for later. He just finished all his prime bowlers, even Kuldeep. And you could see like he wanted to go for the kill, or Pakistani batsmen like under pressure they crumble. Like the batsman who came after Babar got out. Uh, वो प्रेशर में लग रहा था. He was like, you could see like the first run he took, he was like, oh, this is like a big stage. And it is a game of nerves, right? Like for any new player, this playing in front of 120,000 people, World Cup, India versus Pakistan, it is nerves. So like, and any new player, होता ही है कि he will crumble, but then like one after the other, like it was kind of like game over. And yeah, it was not a 340 pitch for sure. 270, 280 would have been a good score. But again, like credit to Rohit Sharma, man, like how he started. Like I feel like the first 3 overs, when Shubman Gill and Rohit Sharma just like kick-started the innings with like fluid boundaries, sixes that set the tone up. Even if it was a 270 chase, I feel like at that point, Pakistan was behind the ball game. And then, yeah, like how we mentioned yesterday, skill set just showed like in the bowling department, fielding, and batting, and the better team won at the end of the day. यार वही कमिंग टू दिस पॉइंट, पता है मतलब मुझे एक पॉइंट ऐसा लगा था कि जैसे अब बाबर और रिजवान फिर भी 3-4 गेम इंडिया के साथ खेल चुके हैं, राइट? T20 वाले भी, एशिया कप वाले भी. यार अब बाबर और रिजवान के बाद है ना, ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं किसी ने इतने बड़े गेम, क्योंकि एक तो इंडिया पाकिस्तान खेलते नहीं है इतना ज्यादा, और फिर ये प्रेशर, अनड्यू प्रेशर होता है. तो जैसे सौद शकील था, वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था यार, वो श्रीलंका के साथ और इन लोगों इन टीमों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी. बट यार वो तो ही वाज लॉस्ट, मतलब पहली बॉल पे उसने रन आउट होने से बच गया वो, एंड ही वाज लाइक नर्वस एंड गुड. मतलब कमिंग टू सिड्स पॉइंट, यार ये मेरे को एक ऐसा गेम लगता है, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एंड इंटेंट. I think Rohit Sharma should have been given man of the match just for his captaincy. उसकी जो कैप्टेंसी थी ना, मतलब इतनी बैंग ऑन मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं यार. और मेन बात ये भी थी कि लाइक यार होमवर्क एक चीज होती है ना, आई थिंक इंडिया वाले बहुत तगड़ा होमवर्क करके आए थे. जैसे वलीद आई रिमेम्बर तूने एक पॉइंट बोला था कि ऐसा नहीं था कि इंडिया कोई खराब बॉलिंग कर रहा था, लेकिन हम जो अपनी बेस्ट खेल सकते थे वो खेल सकते थे. वो इंडिया वाले क्या कर रहे थे, अपने ए प्लान से हट ही नहीं रहे थे. उन्हें ये पता था कि हाँ, रन रेट इनका 6 से नीचे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, विकेट नहीं गिर रही है, लेकिन आप वो डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ. वेर एज जो ये शादाब और नवाज जब बॉल डालते हैं ना, तो आई हैव सीन कि ये T20 मोड से डालते हैं कि अगर नहीं हो रहा ना कुछ, मेरे को अगले ओवर में विकेट चाहिए, उसके चक्कर में छोटी भी डलती है, उसके चक्कर में फुल टॉस भी डलती है, ठीक है, और फिर वो प्रेशर सारा रिलीज हो जाता है. और इंटेंट तो फिर यार देखो, वो बात सही है, और हम कंपैरिजन नहीं कर रहे किसी इंडिविजुअल प्लेयर का, रोहित और विराट का, क्योंकि यार उन लोग, अभी बाबर और रिजवान को बहुत क्रिकेट खेलना पड़ेगा उनके लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस एक चीज है, राइट? तो यहाँ पर ये बात है. लेकिन फिर भी यार, मतलब मैं ये कहूंगा कि 30 ओवर तक तो गेम सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद तो भाई बिल्कुल ही गेम डेड हो गया. एंड उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार बॉलर्स को इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं हर जगह,
भाई क्यों क्रिटिसाइज करो? 191 का टारगेट अहमदाबाद Yeah. क्रिकेट तो में नहीं है। जब आप स्टार्ट ही एक ऐसे टारगेट से करते हो ना जो आपको पता है कि चेज हो ही जाना है, तो हाँ आप बॉलर्स को नहीं कर सकते। द सेम वे आई जस्ट वांट टू गो बैक टू अपना वो इंडिया पाकिस्तान गेम जो हम 10 विकेट से हारे थे। उसमें भी हम्म कई लोगों को मैंने देखा कि भैया वो बॉलर्स ने विकेट नहीं लिया, कुछ नहीं किया। कम ऑन, हम्म जब बैट्समैन ही कुछ नहीं कर पाए तो वो बॉलर्स के ऊपर प्रेशर ऑलरेडी है कि भाई हमारे हाँ पास स्कोर कम है डिफेंड करने का, तो बॉलर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज के लिए। Yeah. No, या like again, like just coming back to like fielding too. There were so many like misfielding. They were like looking so sloppy. And again, it's just that हमने जैसे कल डिस्कस किया, if Pakistan has to like make it to the top four, like few of their big players need to have a dream run, and then like they need to like click in each department. Otherwise, like the the show they put up today, it was like kind of not like means I'm at this point I'm like their matches coming up are against Australia, South Africa. So it's gonna be really hard. But few of the statements that are coming out, जो Mickey Arthur की आई, that's so funny. मिकी Yeah, आंसर he's ने got to stay बोला ना positive, right? नहीं यार, He said विच beating इज in the फेयर, final. विच इज हाँ फेयर। Sorry. हमें लगता नहीं है कि आप फाइनल में मिलेंगे, पर आए, प्लीज आए, हम तैयार हैं। भाई जस्ट एज अ क्रिकेट सपोर्टर आपको बोलना चाहिए नहीं, देयर आर बेटर टीम्स राइट नाउ जो डिजर्व करती है। नहीं, यार, he can't जस्ट say that, हाँ right? नहीं, आई एग्री, आई एग्री। नहीं 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 यार, इतना तो दिल से तू होना भाई चाहिए। फुल ऑन अपनी टीम को सपोर्ट कर, एंड बनता है। तक अपनी टीम को सपोर्ट करना बनता है भाई, ये तो मैं अग्री नहीं करता। क्योंकि चाहे मुझे याद है वो T20 वर्ल्ड कप में जब हम पाकिस्तान से हारे थे और फिर न्यूजीलैंड से भी हार गए थे, फिर भी हमने 3 गेम जो अफगानिस्तान अफगानिस्तान से गेम थे हमने सपोर्ट किया था इंडिया को। no, yeah, like भाई it's just like the downfall. Till 2 months back, everyone was like banking on Pakistan, right? They were the number one day team. Immediate like वो शाह को इंजरी हो गई ऐसे थोड़ी ना पूरी टीम चेंज हो गई. But it's just that like I'm not sure like. But again, like Australia has had a like bad start to the tournament, so maybe hoping they'll pick up their game and it we'll get to see more interesting games. But at this point, today was यार like, मैं अभी भी राइट ऑफ नहीं कर रहा किसी को। भाई तू हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? तू बोल, हाँ तेरा यार हक ये है, मैं तू कौन सा बोल। यार मेरे को सिर्फ ये जानना है कि ये शाहनवाज लहानी फ्लाइट में या खेलने की कोई उम्मीद है उसकी या हो गया? मतलब मेरे को समझ नहीं आया, जो बंदा एशिया कप के स्क्वाड में था वो आपके स्क्वाड में है क्यों नहीं? ये आई थिंक वलीद को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉरी क्या हाँ था कि कहानी हमारे स्क्वाड में क्यों नहीं है? और वो अभी भी फ्लाइट हाँ, में है मतलब या जो वापस आ गया? ये वो हाँ, यू पहला केस क्वेश्चन कि वो वो था। क्या कर रहा है, ही इज बिकम अ जोक। एक पॉइंट पे ही सीम लाइक अ गुड प्रॉस्पेक्ट। आई नो ये बैंटर वगैरह, मैं फिर भी थोड़ा सीरियस टोन में जवाब दे रहा हूं बिकॉज़ आई एम रियली नहीं, पिस्ड। मैं वैसे मैं आई एम ऑन अ सीरियस आस्किंग ऑन अ सीरियस नोट कि जो बंदा एशिया कप के स्क्वाड में आपका बॉलिंग पे था, व्हाई इज ही नॉट इन योर टीम? यार आई डोंट रिकॉल हिम प्लेइंग। ये जो अभी अभी एशिया कप हुआ है इसमें कोई भी गेम खेला दहानी नहीं, गेम नहीं खेला था, नहीं ही वाज I'll टीम give स्क्वाड you में एज अ बैकअप बैकअप ही जब है। स्क्वाड में। नहीं नहीं नसीम शाह नहीं यो इंजर्ड हुआ। वलीद, I'll give you a यार बैकग्राउंड क्या था उसका। वो जो एशिया कप में जब नसीम को इंजरी हो गई ना, तो इन्होंने क्या किया, धानी ने CPL खेलना था, तो वो वेस्ट इंडीज जा रहा था, वो वेस्ट इंडीज वहां लैंड हुआ, इन्होंने धानी को बुला लिया कि तू उसकी नसीम की रिप्लेसमेंट बन के आ जा। वो 28 घंटे की फ्लाइट लेके आया है और यहाँ लैंड होते ही ये लोग श्रीलंका से हार हाँ, चुके हैं और फिर उसको वापस जाना पड़ा है। वो ना CPL का रहा, ना वो पाकिस्तान का रहा, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप से भी स्क्वाड से ड्रॉप कर और दिया। तो एशियन गेम्स इट्स के स्क्वाड में भी नहीं था वो। इट्स अ हाँ, हाँ शिट शो, राइट? तो मिसमैनेजमेंट है, मिसकम्युनिकेशन है। योर टीम कैप्टन इज थिंकिंग समथिंग एल्स, आपका कोच कुछ और सोच रहा है, आपके सेलेक्टर कुछ और सोच रहे हैं। एनीवेज, दहानी whoever man, he's not the solution. हमारी solution बहुत ज्यादा deep rooted है. uh, हम्म हम we're like a tier below uh, the teams like India. Like India deserves to be like favorites every single tournament. I know leading up to this match there was a lot of banter and favorites and all of that, but if हम्म India plays like this, the way they played against Australia, they should be. I mean, they're playing at home for sure, so it makes sense. But like we're accustomed to these conditions as well. Babar looked good, Rizwan looked good, but they had to yeah capitalize. They had to make more of everything. Yeah, man, it's like I have to give credit to Rohit as well. He seemed like a guy on a mission to
kind of show the difference between the two teams. Like he wanted to take on Shaheen, he wanted to destroy the bowling, and he did so for the most part. Like it was very easy for him. So जहाँ पे उसकी captaincy की भी कल बात हो रही थी थोड़ी बहुत, have to give credit to him. Mentioned by I think Karan or Sid, made really good changes. Stuck with Siraj when he was getting hit as well. Batting wise, you know, I know कोई भी चल सकता है एकदम शबमन शबमन चलेगा, विराट चलेगा, अय्यर भी चला है, केएल. You guys have a lot of weapons, but Rohit's been consistently like leading from the front, and that is driving his captaincy and the campaign for India really well. So we're early stages, 3 games, 6 games to go, but uh, yeah, from a Pakistan standpoint, I can just say that we've lost to India badly in previous tournaments as well. It's not as if we've won those tournaments, but like I have to kind of say, okay, we're used to like it's not a surprise when we lose to India badly. And hindsight is 2020, of course. But so we'll try to make the most of what we can do against the Englands, New Zealand, Australia's, South Africa. We know we can beat them. And we have beaten them. Australia is a different one. Australia, we have different difficulty beating in World Cup competitions. Afghanistan too, we still managed to beat them. But anyways, the goal is still making the top four, semi-finals, and then it could be anybody's game. You never know. Yeah. भाई Yeah, go ahead. just धानी's point, वो उसका प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल में खो गया है भाई. तुम बारी बारी उसके प्लेन का बोलते हो, वो और सीपीएल वो पास में ही है ना, वो बर्मुडा ट्रायंगल में खो गया. हिज हिस्ट्री नाउ. But like जैसे नहीं, हम बोल रहे हैं to हाँ, Waleed's point, like yes, captain leading from the front is like the most um, iconic thing and like the most motivating thing. Plus जैसे yeah, हम internally भी discuss कर रहे हैं, Team India looks like they are on a mission. They are They mean coming business. together as a team led by a strong captain, and obviously as a captain, if performances are coming, that boost your confidence, which in turn boosts like the entire The team's whole confidence. performance. Yeah. Yeah, like pretty much he like set the tone up, and it's not only about Rohit. Rohit even in post match said like it was a team effort, but and we are seeing as Indian cricket fans, we are seeing like we see a different mindset, body language, and they want to win. So hopefully we continue the same way. It's still a long tournament, yeah, but so far we're looking strong. यार एक लाइक बड़ी स्मॉल सी चीज है, जैसे जो इंटेंट की बात करी है ना सिड ने. आई थिंक पाकिस्तान की टीम लाइक से बाबर के अंडर, मतलब जो इवन इंडिया में भी, मतलब मैंने जो फील करा है कि बहुत जरा थोड़ी बहुत, मतलब हम पहले तो बहुत लड़ते थे और ये सारी चीजें करते थे, बट अब रिस्पेक्ट जो आई है ना थोड़ी पाकिस्तान की, वो इसलिए आई है कि तुम एक बार जब जीते हो तो बाबर के अंडर टीम बहुत हम्बल है. बट hmm, हम्बल के साथ साथ Hmm. यू डोंट हैव टू बी लाइक वेरी एरोगेंट पर्सन और समथिंग, बट समटाइम्स यू हैव टू शो योर हंगर. जैसे मैं एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का इंस्टेंस देता हूँ. रोहित शर्मा जब जीरो पे आउट हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा कोई पहली बार जीरो पे आउट हुआ है, लेकिन यार जो उसका एक्सप्रेशन था ना, इट सेड लॉट ऑफ स्टफ कि वो करना कुछ बहुत कुछ मतलब नहीं चाहता था, लेकिन वो 30-40 रन तेज मारना चाहता था. Right. ऐसी कोहली जब 85 पे आउट होके गया, उसका ड्रेसिंग रूम का जाके वो अपना सर पीट रहा है कि भाई क्यों आउट हो गया मैं. तो आई थिंक समटाइम्स यू हैव टू शो योर हंगर. भाई ठीक है आप हम्बल हो सारे, वो अच्छी चीज है, बट समटाइम्स बड़े टूर्नामेंट्स में यू हैव टू गो लाइक अपने अपने जो वो है क्या कहते हैं, अपने नेचर से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड यू हैव टू शो द अदर टीम्स दैट यू आर हियर टू विन. एंड मेरे आई मेरा थिंक. एक क्वेश्चन है आप हाँ. लोगों से, जस्ट ऑन दिस पॉइंट ओनली. डू यू थिंक इस इन टूर्नामेंट्स में स्पेशली आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनका जो माइंडसेट होता है और जो वो एक एग्जांपल पुट फॉरवर्ड करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है. जैसे तूने अब रोहित और विराट की बात की है, आई थिंक इट इज द सेम फॉर एवरी टीम. क्योंकि अब yeah, रिजवान और बाबर वहां पे एक सीनियर प्लेयर्स हैं, राइट? इफ दे आर पुटिंग दैट परफॉर्मेंस, इवन इंक्लूडिंग शाहीन एज वेल इन दिस, इवन हैरिस राव, आई थिंक दे हैव टू बिलीव इन देमसेल्फ. और अगर वो बिलीव करके वो परफॉर्मेंस देंगे, तो आई थिंक जो यंग प्लेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं वो चीज. इज दैट द थिंग? व्हाट डू यू गाइस थिंक? For sure. मेरे हिसाब से जो खुश ने, and we could see it like पाकिस्तान की बैटिंग में, I didn't feel like from ball one there was like a hunger or an intent. जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे, regardless of the result, there was like दोनों तरफ से you feel that like competitive. Okay, like we are here to win. We are like head to head. Like that vibe was missing. Means bowling may I feel bowlers didn't have
much of a chance with such a low score, but still like Roth wherever he could. जैसे उसने अय्यर को bouncer मार के he was like showing up. But batting में they were just felt like okay, we're going through the motions and just like playing. There was the hunger was missing. Whereas like जैसे regard not only Pakistan match, like Australia match, even Afghanistan match, when our openers are coming out, Virat Kohli, they're coming out with like, no, I want to do it. I want to do it for my team. Hmm. And as spectators, we could see that, right? And not only one time from the ball one when India started their tournament, we have been Right. saying that. So Pakistan के Yeah. जैसे I'm not sure like उनकी body language, they are not जैसे इमाम उल्लाह वगैरह, they are not those players who fight fire with fire. They're more of like okay, take the back seat, just do their work. But इंडिया पाकिस्तान में I feel वो वाली चीज मैटर करती है. Mhm. Waleed, your response. Yeah, said I usually agree with you like on a lot of things 100%. इसमें थोड़ा सा I will slightly disagree with you. I did feel like शुरू में the way Abdullah Shafiq was batting, and I think Imam was more of a sidekick to Abdullah Shafiq, but I feel like Indian bowlers were bowling really well, hitting the channels. Bumrah is always dangerous, but Abdullah Shafiq, I felt like was managing them pretty well. Bumrah ko ek point pe he came down the wicket and it wasn't even like a half volley even after he Yeah. came down the wicket. But Yeah. उसने good length पे एक shot मारा था mid on के ऊपर, which I felt like it made a statement of aggression के we're here to sustain a high level of play. Uh, Unfortunately, it didn't happen. They got out, and that's the thing. You get one good ball. You have to negotiate 30, 40 good balls when you're playing against the quality of bowling that India has with their spin and their pace department. And that's something we're not used to doing. But I feel like we came out really pumped, and we just got out to one good ball. It's a bit unfortunate, but like it is what it is. We'll take this and hopefully get stronger. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मैं पर्सनली ऑन अ टेक्निकल नोट आई फील कि मे बी पाकिस्तान वर ओवर टारगेटिंग इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल राइट जो कोलैप्स उनका हुआ भी है मतलब अगर आप देखते हो 150 फॉर 2 इज अ वेरी गुड पोजीशन ऑन अ विकेट दैट वाज नॉट फ्लैट और एज फ्लैट एज पीपल क्लेम्ड इट टू बी राइट तो 150 फॉर 2 से मे बी दे फेल्ट कि यार नहीं अब हम 4 पॉइंट समथिंग पे चल रहे हैं एंड हम लोग को नहीं और बढ़ाना है 350 करने हैं 320 करना है 310 करना है इट वाज नॉट अ 310 विकेट राइट इट वाज मोर ऑफ अ 250 260 वुड हैव बीन पार टुडे आई फील मतलब we saw India batting as well कि it was stopping and coming it wasn't that easy to chase as well but हाँ मतलब to the point intensity might have been there but Pakistan managed a collapse that they only Pakistan can sometimes I'm seriously lost for words कि कोई 150 for 2 से 191 I mean कैसे यार I mean you should have crossed 220 230 made a match out of it maybe but yeah that's what I feel या लाइक यार इंटेंट है एक्चुअली क्या कोलैप्स करना यार अपने अपने स्टाइल है जैसे हमें पता है हमारे इंडिया के जब कोलैप्स होता हमारा है तो हमारा हमारा exactly क्या होता है 10 पे 3 exactly होते हैं 10 पे 4 होते हैं ये हमारा yeah स्टाइल है कोलैप्स का और उस दिन फिर नहीं हो पाता लेकिन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का क्या सीन है कि भाई ये जो अच्छी स्टार्ट के बाद कोलैप्स हुआ ना देन इट्स लाइक इट्स बिट काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग कि ये ऐसा yeah ऐसा क्यों हुआ है तो बस yeah यार एंड ऑफ इट पता है मैं तो अभी भी ये कहूंगा मेरी टॉप 4 में अभी भी पाकिस्तान है बट इट विल चेंज when if they get beaten by Australia. दूसरा I यार ये यार इमोशंस को अगर दूर रखें मैं yeah लेट्स स्टेप बैक तीन yeah तीन मैच हुए हैं राइट पाकिस्तान ने भी 2 कन्विंसिंग अच्छे विन्स ही हम्म जीते हैं ये मैच हम ज्यादा इमोशंस और हाई के साथ देखते हैं तो इसलिए ज्यादा जजमेंट्स आ रही है यहाँ पे बट करेक्ट अगर इस सब चीजों को पीछे छोड़ दो आई स्टिल फील लाइक टूर्नामेंट इज स्टिल वेरी अर्ली एवरीथिंग इज ओपन anybody can get into any situation so I yeah still feel like as coach said I'm also not changing my top 4 मेरे top 4 में अभी ये भी इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है Yeah. on that Uh, note मेरा ना एक sorry Sid go ahead no, no, go ahead. नहीं आई वाज जस्ट आस्किंग मतलब मेरे को आई नो टॉप 4 की ऑन दैट लाइंस आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज पाकिस्तान प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ कैसे विकेट्स पे खेलना चाहते हो जैसे मुझे पता है इंडिया का प्रेफरेंस है मे बी स्लो ट्रैक्स क्योंकि वो हमारी बॉलिंग लाइनअप को सूट करता है थोड़ा ज्यादा इंग्लैंड का प्रेफरेंस है फ्लैट ट्रैक्स क्योंकि उनकी बैटिंग हैवी वो है
right? Similarly, South Africa also flat tracks. तो मुझे मतलब in terms of an aspect of an audience, right? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस एस्पेक्ट में, क्योंकि बॉलिंग हैवी पाकिस्तान जब होती थी तो obviously they prefer to play on flat tracks, any kind of tracks they could have managed their workload. But with that and only all the burden falling on Shaheen's shoulder and Rob's shoulder, what kind of pitches would Pakistan prefer going forward? And based on that, obviously their tournament run would matter a lot, right? कि किस तरह की विकेट्स पे वो कैसे परफॉर्म करते हैं. Yeah, I'll start with this. Flat decks for sure. We don't have the batting firepower that in India has, like in England has, even what in Australia has, New Zealand has, South Africa has. We don't have that firepower, right? Abdullah Shafiq, they're not going to give you 120, 130 strike rate. Rohit Sharma, just say 84 or 60 mara. We don't have those kind of people, right? We have like these slim, chote batsmen who are technically good, who are mentally tagde. They're trying to be. They have good intent, but they're not like master blasters. They're not going to bat hit you out of the park and bat you out of the game. So it's honestly it depends on what our bowlers like bowler strength is. Right now we're trying to gauge कि हमारी strength spin तो चलो ठीक है give up कर चुके हैं for the most part. We're like running out of resources. Pace department में like we're just hanging in there. Shaheen's not at his best, so like ideally, yeah, for Shaheen, we'd want swinging conditions. We'd want semi good bounce, but we don't want to be having high run chases like we did against Sri Lanka. Sri Lanka is a weaker team than us right now. So chal gaya, but like we like a pitch like this, the one that we had today. Uh, I think that's okay with us when we're playing teams outside of the subcontinent. Like we're playing teams. Yeah. India is very suited to these conditions. So I know that's their strength as well. They'll beat us because they're stronger than us here. A team that's not accustomed to these kind of conditions, I feel like any team from England, the teams that I mentioned, I think we would have a much better chance. Yeah. Yeah, Yeah, and that's a चलो great point, Waleed. ये आज की pitch was kind of like according to जैसे इनके resources है bowling, even like at the end Bumrah said the ball was reversing, right? So when it comes Yeah. to reversing, Pakistan fast bowlers, Yeah, exactly. that's their expertise. So Abhishek, I think like आज की pitch again, like India played exceptionally well, but Yeah, just exactly. seeing the Pakistan lineup, this could be their ideal track too. If they get like They, 260 and then they have like the ballers to just like mix it up when reverse swing comes into the picture. But yeah. I know, like how KD said, it's still early days. Not writing anyone off. Could be an off day for Pakistan. The pressure got onto, but so I I guess think Tuesday को है. That's yeah. Friday, next Friday, 20th October. Okay, so that was the video for India versus Pakistan game, and here we sign out. Quick bucks. Okay, Waleed, thanks a lot, bro. Thank